Yes, hi all the students. Yes, welcome to AceCat YouTube channel once again. My name is Anil Chaudhary, founder of this particular channel and students AceCat पर I myself और मेरे साथ founder अंकित शर्मा सर, अर्पित सोनी सर, ये सब लगातार बहुत अच्छा content लेकर आ रहे हैं for CAT. So I take the classes for VA plus RC and then you have Ankit Sharma sir who takes the classes for quantitative aptitude and then we have Arpit sir who takes the classes on DI plus LR. So students, welcome to this wonderful series which is going on and you people are actually loving this series and you people are actually the kind of response which you are giving that becomes a morale boosting for us. तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को लेकर एक बहुत अच्छी सी जर्नी वी पीपल आर रनिंग राइट नाउ. दिस बिकम्स द 14th क्लास ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन and the students who have now joined the channel, please ensure that, yes, just one second, yes, all okay. The students who have now joined the channel, please ensure that you people keep watching all these videos and all these live streaming and whatever lectures we have taken so far, each and every passage, it's worth watching. It's worth going through all the passages and understanding the deep learning which we have discussed so far. So all the students, welcome on board. बहुत जल्दी से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रीमिंग को और आज का जो वंडरफुल पैसेज है, वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस दैट पैसेज. लास्ट क्लास जो हमने कल ली थी स्टूडेंट्स, इन दैट वी डिस्कस्ड अबाउट one passage which was actually there in CAT 2023 slot 1. And today students I am going to take another passage from the same slot. What I want is, ये जो actual CAT के जो latest papers है, when we discuss them, उसी से समझ में आता है कि latest क्या pattern CAT का चल रहा है. And moreover students, the best part with CAT is in the last 10 years almost, CAT का जो overall paper का pattern है, जो standard है, जो level of the questions है, वो more or less set हो चुका है. तो एक्चुअली कैट इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्स जहाँ पर सरप्राइजेस अब बहुत लेस होते हैं. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ कैट, तब तो स्टूडेंट्स पता ही नहीं होता था कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैट में आएंगे एंड व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. बट नाउ यू पीपल नो दैट पिछले 5-10 सालों में कैट में कोई मेजर चेंजेस नहीं है. बिफोर कोविड ये 3 घंटे का टेस्ट था, लेकिन 2020 से जब से कोविड आया ये पूरा टेस्ट 2 आवर्स का हो गया. सो 40 मिनट्स पर सेक्शन. And we people very well know that 40 minutes mein we need to solve 24 questions of English. And out of 24 questions, 16 questions will be of passages and 8 questions jo possibly jumble paragraph, jo possibly para summary, these kind of questions will be there. So pattern bilkul fix hai. We don't consider or we don't predict that कि कोई बड़ा change इस बार होगा, ऐसा कुछ नहीं. कैट वालों ने स्टूडेंट्स अपने पैटर्न को बिल्कुल फिक्स कर दिया. पेपर जो आएगा VA plus RC में, दैट इज गोइंग टू बी रीडिंग ओरिएंटेड. या मैथ्स में कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा सा वेटेज अलग अलग एरियाज में चेंज होता रहता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट VA plus RC, इट डज नॉट हैपन हियर. सो वी शुड एक्चुअली टेक एडवांटेज ऑफ दिस. व्हेन एवरीथिंग इज सेड, व्हेन वी नो कि कितना टाइम मुझे सेक्शन में देना है, व्हेन वी नो कि कितने क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर टाइप के आएंगे, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स बहुत प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाकर और अच्छी प्रैक्टिस करके we people can master and we people can actually command a very good percentile in VARC section. Okay, चलिए, so all the students who are on board live with me, welcome once again. सबसे पहले तो स्ट्रीम को लाइक करो. अब तो मैं पहले भी कह सकता हूँ लाइक करने के लिए, बिकॉज इतनी सारी क्लासेस मैं ले चुका हूँ और जिन बच्चों ने मेरी पुरानी लाइव स्ट्रीमिंग देखी है उन सबको पता है कि what kind of depth we are actually touching okay in these classes. तो आज का जो पूरा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पैसेज है, दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन लिटरेचर. स्टूडेंट्स कैट का एक फेवरेट एरिया होता है लिटरेचर. ओके, द टाइप्स ऑफ बुक्स, द टाइप्स ऑफ नॉवेल्स एंड द वेरियस आइडियोलॉजीज, द वे ऑफ राइटिंग, ओके, द जॉनर, दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो लिटरेचर से रिलेटेड एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल, एक बहुत अच्छा सा पैसेज जो लास्ट ईयर कैट में था, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. इवन इफ स्टूडेंट्स योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पैसेज मे बी अ बिट वीक, but still out of 4 questions, we people can still manage to solve at least 2 or 3 questions, because these 2 or 3 questions are direct, but still that does not mean कि questions will be very easy. कोई भी student बिना ढंग से चीज़ों को समझे, हो सकता है we can commit a mistake. तो start करें आज का passage. Okay, तो सबसे पहले students I am showing the passage to you. This becomes the part 1 of the passage.
जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इस पूरे पैसेज को अपन सॉल्व करेंगे. ईच एंड एवरी लाइन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल gist of the passage. Okay, this becomes the second part of the passage. I want जो भी स्टूडेंट्स बाद में इसको as a video देखेंगे, please pause it, go through the passage, understand what is the essence of the passage, understand what actually the author wants to communicate, and then come on the questions. बट इसके बाद स्टूडेंट्स पूरे पेशेंस के साथ 15-20 मिनट्स जो मैं इस पूरे पैसेज को डिस्कस करूंगा, इट शुड बी एन ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट कि उस पूरे डिस्कशन को सुने. ओके, और मैं स्टूडेंट्स कभी भी पैसेज पढ़ाता हूँ, आई डोंट जनरली टेक अ रिस्क. मैं पूरे पैसेज को ढंग से समझाना और उसके जिस्ट तक पहुँचना, आई जनरली फोकस ऑन दैट, एंड दैट इज द रीज़न एक्यूरेसी हमारे स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी होती है. चलिए स्टूडेंट्स, कमिंग ऑन, these are the first two questions based on the passage. Okay, first two questions. चलो इन दोनों questions को एक बार अपन go through करते हैं, and it is always advisable to have a look over the questions first before we come on the passage. चलिए, coming on the very first question, all of the following claims contribute to the remapping discussed by the passage except. The students, the keyword happens to be remapping. एटलीस्ट हमें पता चल गया कि व्हाट आर वी डिस्कसिंग अबाउट, और कहीं पर भी इस पूरे पैसेज में रीमैपिंग के बारे में कुछ भी लिखा है तो वी हैव टू बिकम एक्स्ट्रा केयरफुल देयर. क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट माइग्रेशन इन द इंडियन ओशन वर्ल्ड. सो हियर स्टूडेंट्स, दो कीवर्ड्स हैं. एक, वी आर टॉकिंग अबाउट माइग्रेशन इन द इंडियन ओशन वर्ल्ड. सो इंडियन ओशन वर्ल्ड एंड द माइग्रेशन. तो कहीं पर भी स्टूडेंट्स अगर ये कीवर्ड्स हैं, we people can be extra careful and we can manage to get the answer directly. कई बार मैं बच्चों को देखता हूँ, वो किसी भी क्वेश्चन का जब आंसर देते हैं, they read the question, they identify that the answer lies in this particular paragraph, they read the paragraph and try to give the answer. But you people try to understand, कई बार सिर्फ उस पैराग्राफ को पढ़ के आंसर देना okay, थोड़ा सा सुसाइडल हो सकता है. Why I'm saying this? Because कई बार जब तक पैसेज का कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होता, we often come at a mistake. तो स्टूडेंट्स, हमें उस पैराग्राफ को आइसोलेशन में नहीं समझना है, हमें उस पैराग्राफ को उस पूरे पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में समझना है. तो इसीलिए इवन इफ यू रीड दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, एटलीस्ट हैविंग अ ग्लांस ओवर द कंप्लीट पैसेज इज नीडेड टू बी श्योर ऑफ व्हाट इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस. वेलकम ऑन बोर्ड जो भी स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, फैंटास्टिक. On the board of the nature, sorry, on the basis of the nature of the relationship between the items in each pair below, choose the odd pair out. तो कल मिलाकर स्टूडेंट्स ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, पैसेज को जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा. और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं. ओके, इन्हें समझना बहुत मुश्किल नहीं होता. डायरेक्ट एक रिलेशनशिप होगा तो वी पीपल कैन ईजिली फाइंड आउट. लेट अस सी. एंड क्वेश्चन नंबर 4, इट सीम्स टू बी अ लॉन्ग क्वेश्चन. All of the following statements if true. स्टूडेंट्स, कहीं पर भी अगर ये लिखा हुआ आ जाए if true, इसका मतलब है हमको ये मान के चलना है कि ये चारों ऑप्शंस बिल्कुल ट्रू है. स्टूडेंट्स, try to understand whenever the question says all of the following statements if true, तो आप ये प्रिज्यूम करके चलो कि ये चारों के चारों ऑप्शंस बिल्कुल ट्रू हैं. और कहीं पर भी लिखा हुआ आ जाए if false, तो मान लो कि ये चारों ऑप्शंस फॉल्स हैं. अंडरस्टैंड? तो इसीलिए स्टूडेंट्स, इफ ट्रू मान लेते हैं चारों ऑप्शन सही है, तो विच ऑप्शन वुड वीकन, तो कौन सा ऑप्शन वीकन करेगा. एंड देन स्टूडेंट्स, द लास्ट वर्ड इज एक्सेप्ट. इसका मतलब है ये चार ऑप्शंस अगर सही हैं, जो कि चलो मान लेते हैं कि ऑल दी 4 आर करेक्ट, सो ऑल दी 4 ऑप्शंस वुड वीकन एक्सेप्ट. इसका मतलब है वी नीड टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन जो एक्चुअली स्ट्रेंथन करेगा. क्या स्ट्रेंथन करेगा? द पैसेजेस क्लेम about the relationship between mainstream English language fiction and Indian Ocean novels. Anyway, students, possibly Indian language fiction and Indian Ocean novels, इन दोनों के बारे में पैसेज में जो भी लिखा है, हमें अल्टीमेटली उस ऑप्शन को मार्क करना है जो पैसेज के क्लेम को स्ट्रेंथन करे, सपोर्ट करे, उसे सपोर्ट करे. अंडरस्टैंड? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इस पूरे क्वेश्चन का मीनिंग. इन चार ऑप्शंस में से वी नीड टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन which supports what the passage is claiming. Okay,
So in this way, students, you people have to be careful about understanding what is the meaning of the question. और एक बार जस्ट अ सेकेंड सॉरी, एक बार स्टूडेंट्स अगर आप समझ गए कि इन तरह के क्वेश्चंस का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, ओके, तो आफ्टर दैट इट बिकम्स वेरी मच इजी फॉर अस. एनीवे स्टूडेंट्स, इन मैक्सिमम क्वेश्चंस इफ ट्रू लिखा होता है, बट कुछ क्वेश्चंस में पॉसिबली इफ फॉल्स भी आ जाए. तो एनीवे स्टूडेंट्स, व्हाटएवर इज गिवन, आप बस उस अजम्पशन को लेकर चलो. एनीवे, लेट अस स्टार्ट टेकिंग द पैसेज नाउ. ओके, the students, now what is more important is we need to understand the passage. अभी तक ये समझ में आ चुका है कि this passage is about Indian Ocean novels and this passage is about English language fiction. तो students, हमें समझ में आ चुका है कि this passage is all about literature. अब आपको लगता है कि लिटरेचर के पैसेज को समझने में, yes, it is your forte, but it is always advisable कि इस पैसेज को अपन करें. और तुम्हें लगता है कि नहीं सर, लिटरेचर का पैसेज तो मुझसे कभी होता ही नहीं है, ओके, इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड द पैसेज ऑन लिटरेचर, तो वहाँ पर मेरा एडवाइस होगा कि हम उस पैसेज को फर्स्ट स्किप कर दें. ओके, अगर आपके पास बेहतर चॉइसेस अवेलेबल हैं. बट ये डिसीजन जितना टाइम दी, एंड दैट इज़ द रीज़न, इसमें क्या होता है ना, एक गट फील बहुत हेल्प करता है. पढ़ते हुए, टॉपिक को देखते हुए, क्वेश्चंस को देखते हुए, द मोमेंट यू रियलाइज, यस, द मोमेंट यू गेट अ गट फील, यस, आई कैन हैंडल इट, सो दैट गट फील, यू पीपल शुड रिलाई मोर ऑन दैट. तो गट फील अगर है कि मैं कर लूँगा, तो आप देखोगे स्टूडेंट्स उस पैसेज को कर पाना बिकम्स इजी फॉर अस. ओके, चलिए, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को पूरे पेशेंस के साथ. आई विल टेक माय ओन टाइम टू एक्सप्लेन दिस पैसेज. लेट अस ट्राई टू सी नाउ. फॉर अर्ली पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड पोस्ट कॉलोनियल. यू पीपल वेरी वेल अंडरस्टैंड कॉलोनीज का मतलब क्या होता है. यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉलोनीज का मतलब, स्पेशली ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को अलग अलग टाइम पर रूल किया है. सो बहुत सारे देश दुनिया के, दे वर एक्चुअली वंस कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स. सो पोस्ट कॉलोनियल, जब ये कॉलोनी सिस्टम स्टार्ट हुआ, ब्रिटिशर्स ने वेस्ट में बहुत सारे देशों पर कंट्रोल करना स्टार्ट किया, वहाँ पर ब्रिटिशर्स बसना स्टार्ट होते हैं. सो दैट पीरियड इज कॉलोनियल पीरियड. ओके, तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड फॉर अर्ली पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर. अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, this especially I am talking about the Western literature. I am talking about the Western countries. So Western countries and Western literature, and especially which time period? The post-colonial literature. Okay, इसका मतलब है ब्रिटिशर्स उन देशों में बस गए, उसके बाद का जो लिटरेचर था उसकी हम लोग बात कर रहे हैं. So for early post-colonial literature, the world of the novel was often the nation. Post-colonial novels were usually concerned with national questions. Sometimes the whole story of the novel was taken as an allegory of the nation, whether India or Tanzania. This was important for supporting anti-colonial nationalism, but could also be limiting, land-focused and inward-looking. First paragraph comment करता है students post-colonial literature पर. And first paragraph क्या कहता है कि ये जो post-colonial literature है, it actually focuses on nation and the national sentiments. Students, इसे समझना बहुत मुश्किल इसलिए नहीं है, because even if we talk about the Britishers period in India, okay, उस समय आप देखो बहुत सारे राइटर्स थे, हिंदी के राइटर्स, जिन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे. अंडरस्टैंड, आज जो भी लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी स्टूडेंट्स बहुत सारी नॉवेल्स लिखी गई, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव होता था कि राष्ट्रीय चेतना को जगाना, नेशनल सेंटिमेंट्स को राइज करना, नेशनल सेंटिमेंट्स को जगाना एंड ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक माहौल बनाना. तो उस समय जितने भी नॉवेल्स होते थे, मेजरली दीज नॉवेल्स, दे यूज्ड टू फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स. तो ब्रिटिशर्स को भगाओ, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्वदेशी की भावना, नेशनलिज्म की भावना. सो दैट बिकम्स द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दोज नॉवेल्स. तो ऑथर says that this was important for supporting anti-colonial nationalism, but could also be limiting. तो ये जो नॉवेल्स हैं उनमें सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर क्या है? दे आर एक्चुअली लैंड फोकस्ड ओनली. ओके, लैंड एरिया, कि भाई ये मेरा देश है, तो दे यूज्ड टू फोकस ऑन दैट. एंड दीज नॉवेल्स वर इनवर्ड लुकिंग. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और बहुत अच्छा सा वर्ड है, विच इज एल्गरी. एल्गरी इज अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. व्हाट हैपन्स इन एल्गरी इज देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी. जैसे नॉवल में मैं क्या करता हूँ, नॉवल इज ऑल अबाउट फिक्शन, अ स्टोरी, और स्टोरी के पीछे
मैं रेफर किसी और रियल टाइम या रियल वर्ल्ड स्टोरी को कर रहा हूँ, सो दैट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गरी. यू पीपल सी एक बहुत अच्छा नॉवल है एनिमल फार्म. एनिमल फार्म इज द बेस्ट एल्गरी. तो उसमें स्टूडेंट्स आप देखोगे जितनी भी कैरेक्टर्स हैं और जितनी भी एनिमल्स हैं उनमें एक्चुअली हर एनिमल रशियन रेवोल्यूशन के टाइम जो रियल वर्ल्ड बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, पर्सन्स थे, उन्हें रेफर करता है. तो स्टूडेंट्स, एनिमल फार्म, कैन यू पीपल टेल मी हु वाज द राइटर ऑफ एनिमल फार्म? एंड व्हेन आई से इट इज वन ऑफ द बेस्ट एल्गरीज ऑफ ऑल टाइम, व्हाट एक्चुअली आई मीन टू से, एंड व्हाट वाज द एल्गरी, और जितनी भी एनिमल्स हैं वो एक्चुअली किसको रेफर कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, एनिमल फार्म पर मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा आर्टिकल इस क्लास के बाद जरूर पढ़ लेना. दैट विल हेल्प यू इन कैट. ओके, चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस प्रोसीड नाउ. माय न्यू बुक राइटिंग ओशन वर्ल्ड्स. अब स्टूडेंट्स, ऑथर की जो नई किताब है, द नेम ऑफ द बुक इज राइटिंग ओशन वर्ल्ड्स, एक्सप्लोर्स अनदर काइंड ऑफ वर्ल्ड ऑफ द नॉवल. ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, व्हेन आई से अनदर काइंड, तो एक काइंड तो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, ओके, द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर. और यहाँ पर जो नॉवेल्स हैं, दे फोकस ऑन नेशन, दे फोकस ऑन लैंड, दे फोकस ऑन इनवर्ड लुकिंग. बट नाउ माय न्यू बुक राइटिंग ओशन वर्ल्ड्स explores another kind of world of the novel, not the village or nation, but the Indian Ocean world. Okay, Indian Ocean world. The book describes a set of novels in which the Indian Ocean is at the center of the story. Okay, it focuses on the novelist Amitabh Ghosh, Abdul Razak Gurna, Lindsay Collin, and Joseph Conrad, who have centered the Indian Ocean world in the majority of their novels. तो इस बुक में स्टूडेंट्स मैं किसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ? अ सेट ऑफ नॉवेल्स विच हैव बीन रिटन बाय दीज 4 राइटर्स. एंड स्टूडेंट्स, इन चारों राइटर्स में एक कॉमन चीज क्या है? दे हैव एक्चुअली सेंटर्ड ऑन इंडियन ओशन वर्ल्ड. एंड स्टूडेंट्स, व्हेन आई टॉक अबाउट इंडियन ओशन, यू पीपल कैन कॉन्ट्रास्ट दिस विथ लैंड फोकस हियर. तो स्टूडेंट्स, जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, दे वर लैंड फोकस्ड, बट इस राइटर का जो book है Writing Ocean Worlds, that actually focuses on Indian Ocean. So definitely it is focusing on ocean, not on land. So in this way you people can contrast. अब आप आगे देखो, their work reveals, their मतलब कौन? ये चारों writers. Their work reveals a world that is outward looking. Now you people see, post-colonial literature was inward looking, but actually Indian Ocean Worlds and the writings of these 4 राइटर्स, ये चारों ऑथर्स की जो राइटिंग्स हैं, ओके, देयर वर्क रिवील्स अ वर्ल्ड दैट इज आउटवर्ड लुकिंग. सो इन दिस वे, इवन इफ देयर इज नो क्वेश्चन आस्क्ड, यू पीपल शुड बी एबल टू कॉन्ट्रास्ट व्हाट इज रिटन अबाउट द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड व्हाट इज रिटन अबाउट द इंडियन ओशन वर्ल्ड नॉवेल्स. फुल ऑफ मूवमेंट, बॉर्डर क्रॉसिंग एंड साउथ साउथ इंटरकनेक्शन. डू अंडरस्टैंड साउथ साउथ इंटरकनेक्शन? कई बार पेपर सेटर आपको कैसे कंफ्यूज करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो लिखा है साउथ साउथ इंटरकनेक्शन, बट पॉसिबली पेपर सेटर इन वन ऑफ द ऑप्शंस वो लिख देगा नॉर्थ साउथ इंटरकनेक्शन या फिर नॉर्थ नॉर्थ इंटरकनेक्शन. एंड मेनी टाइम्स मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको ओवरलुक करते हैं. तो बस दिस इज समथिंग विच वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट. दे आर ऑल वेरी डिफरेंट. दे आर ऑल वेरी डिफरेंट फ्रॉम colonially inclined Conrad to radically anti-capitalist Collin. The students try to understand. The author says, ये चारों writers भी बहुत different understand. Conrad is colonially inclined, whereas students Collin is anti-capitalist. But together draw on. Even if students they were different, but still, even if they are different, but still, they all are together. They together draw on and shape a wider sense of Indian Ocean space. To themes, images, metaphors, and language. This has the effect of remapping the world in the reader's mind, as centered in the interconnected global South. Students, यहाँ पर एक बहुत important word आ चुका है, remapping. और हमने जब क्वेश्चन पेपर देखा था, क्वेश्चंस देखे थे इनफैक्ट, तो वहाँ पर one question or possibly 2 questions were having this word remapping. Now you people try to understand. जैसे एक मैप होता है, पूरे वर्ल्ड के बारे में आपका एक परसेप्शन बिल्डअप करता है, उसी तरह से स्टूडेंट्स से जो नॉवेल्स होते हैं, ये भी रीडर्स के माइंड में एक परसेप्शन बिल्डअप करते हैं. ये मैपिंग और रीमैपिंग वर्ड यहाँ पर क्यों यूज हो रहा है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट?
बिकॉज नॉवेल्स, लिटरेचर, फिक्शन, ये सब क्या करते हैं, रीडर्स के माइंड में एक परसेप्शन बिल्डअप करते हैं, एक मैप बना देते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड इट इज। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव नेवर बीन टू यूएसए, बट अगर मैं 2-3 नॉवेल्स यूएसए के ऑथर्स के पढ़ूंगा अबाउट यूएसए कल्चर, दिस दैट एंड ऑल, उससे रिलेटेड अगर मैं कुछ नॉवल पढ़ूंगा तो आई विल डेवलप अ मैप अबाउट यूएसए इन माई माइंड। सो स्टूडेंट्स, इंडियन ओशन वर्ल्ड के जो नॉवेल्स हैं और ये जो बुक है, दैट इज एक्चुअली रीमैपिंग द रीडर्स माइंडसेट। तो अभी तक रीडर्स का जो माइंडसेट था उसे किसने डोमिनेट कर रखा था, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, द वेस्टर्न लिटरेचर। बट नाउ स्टूडेंट्स, ये जो नई बुक्स हैं, इंडियन ओशन वर्ल्ड नॉवेल्स, दीज बुक्स एंड दिस पर्टिकुलर बुक ऑफ द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर पैसेज, these books are remapping the reader's mindset. So that is what the meaning here is. Yes, algorithm को मुझे वापस एक्सप्लेन करना है। ओके, I'll do it. algorithm का मतलब है स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस कहीं पर भाषण देते हुए देखा। एंड अरविंद केजरीवाल ने बोला कि एक राजा था, एक कहानी सुना, एक राजा था, वो अनपढ़ था, उसे कुछ नहीं आता था, तो जो भी उसके मिनिस्टर्स थे एंड ऑल, द वे दे यूज्ड टू एडवाइज हिम, ही यूज्ड टू टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंगली। ओके, आप सोचो स्टूडेंट्स, ये जो राजा की कहानी उसने सुनाई, देखिए अरविंद केजरीवाल ने ये जो राजा की कहानी सुनाई, तो अरविंद केजरीवाल, दो ही वॉज नरेटिंग द स्टोरी, बट इट वॉज एक्चुअली रेफरिंग टू, ओके, उनका टारगेट क्या था, नरेंद्र मोदी, क्योंकि बहुत सारे स्पीचेस में वो कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी तो अनपढ़ पीएम है, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है, जो मिनिस्टर्स कहते हैं बस वो उसे फॉलो करते हैं। तो इस स्टोरी के बहाने नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम। ओके, अंडरस्टूड? चलो, तो स्टूडेंट्स, आई थिंक सेकेंड पैराग्राफ तक आते आते वी पीपल हैव वेरी मच अंडरस्टूड व्हाट पॉसिबली इज द थीम ऑफ दिस पैसेज। ओके, तो दो अपोजिट themes हैं लिटरेचर की। वन इज द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर विच इज इनवर्ड लुकिंग, एंड वन इज द इंडियन ओशन वर्ल्ड नॉवेल्स विच इज आउटवर्ड लुकिंग एंड विच इज रीमैपिंग द वर्ल्ड इन द रीडर्स माइंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द इंडियन ओशन वर्ल्ड is a term used to describe the very long-lasting connections among the coast of East Africa, the Arab coast, the South and East Asia. These connections were made possible by the geography of the Indian Ocean. For much of history, travel by sea was much easier than by land, which meant that both the cities were very far apart, were often more easily connected to each other than too much closer inland cities. Historical and archaeological evidence suggests that what we now call globalization first appeared in the Indian Ocean. This is the interconnected oceanic world referenced and produced by the novels in my book. Students, समझो आखिर ये इंडियन ओशन वर्ल्ड है क्या? तो बहुत पहले, ठीक है, हिस्टोरिकली इफ वी सी, तो इंडियन ओशन वर्ल्ड, देयर इज वन मोर कमेंट, इज दिस द कैट लेवल पैसेज? राघव अग्रवाल का क्वेश्चन है, is this a CAT level passage? Raghav, this is the actual passage of CAT 2023 slot 1. तो ये CAT level नहीं है, ये CAT का ही पैसेज है। ओके, डन। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन ओशन वर्ल्ड हिस्टोरिकली स्टूडेंट्स आप देखोगे, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है, ईस्ट अफ्रीका, अरब कोस्ट, साउथ एंड ईस्ट एशिया, ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड थे। ये सारे देश, ये सारे रीजन्स आपस में इंटरकनेक्टेड थे बिकॉज ऑफ इंडियन ओशन। एंड स्टूडेंट्स, दिस पैराग्राफ क्लेम्स दैट ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले कहाँ पर हुआ, इंडियन ओशन में। और ये जितने भी रीजन्स थे, ठीक है, जो एक्चुअली सदर्न पार्ट में आते हैं, अंडरस्टैंड, इफ यू सी द ग्लोब, इंडियन ओशन सदर्न पार्ट, तो ये जितना भी रीजन था, अच्छा स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ इन अ बेटर मैनर ओनली व्हेन यू कीप इन माइंड द वर्ल्ड मैप। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा बहुत वर्ल्ड मैप के बारे में पता है, जैसे दिस बिकम्स द अफ्रीकन रीजन, तो दिस इज ईस्ट अफ्रीका, ये आ गया अरब रीजन, एंड दिस बिकम्स एक द एशियन पार्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, साउथ एंड ईस्ट एशिया। ओके, देन यू हैव ईस्ट अफ्रीका, अरब कोस्ट, तो कुल मिलाकर साउथ ईस्ट एशिया, तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है इंडियन ओशन से। तो इस तरह से इसमें
व्हाट यू पीपल कैन डू इज थोड़ा सा, अगर आपको वर्ल्ड मैप पता है तो यूल बी एबल टू कनेक्ट इट प्रॉपरली। अब क्या, तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स इंडियन ओशन वर्ल्ड का मीनिंग ये है, ये जो भी रीजन थे जो इंडियन ओशन के आसपास हैं, दे वर वेरी वेल कनेक्टेड एंड ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले वहीं से स्टार्ट हुआ। एंड मोर ओवर दिस पैराग्राफ सेज दैट सी रूट से कनेक्ट करना बहुत ईजी है। दैट इज द रीजन even if the physical distance between the cities, the port cities was very much, बट फिर भी स्टूडेंट्स उनके बीच में कनेक्शन प्रॉपर था, बिकॉज सी रूट से कनेक्ट होना इज ऑलवेज बेटर दैन द लैंड रूट्स। ओके, तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये बहुत दूर होने के बाद भी आपस में कनेक्टेड रहे, ये बहुत दूर होने के बाद भी ये सारे रीजन्स आपस में जुड़े हुए रहे, ट्रेड, कॉमर्स, कल्चर कुछ ना कुछ चलता रहा। तो दिस इज व्हाट द थर्ड पैराग्राफ टॉक्स अबाउट। नाउ कमिंग ऑन द फोर्थ पैराग्राफ। फॉर देयर पार्ट, Ghosh, Gurna, Colin, and even Conrad reference a different set of histories and geographies than the ones most commonly found in fiction in English. Again, students, author is comparing the literature which were written by these four writers and the fiction in English. तो students, जो western fiction है उसे हम लोग actually compare कर रहे हैं with the writings of these four writers. Different set of histories and geographies than the ones most commonly found in fiction in English. अब ये जो contrast है students, this plays the most important role and you will see like बहुत सारे questions को solve करने में this is going to help us. Those commonly found ones are mostly centered in Europe. Students understand, those commonly found ones are mostly centered in Europe. Commonly found ones का मतलब I am talking about okay, the fiction in English. ये सारे फिक्शन, ये सारे नॉवेल्स आर मोस्टली सेंटर्ड इन यूरोप और द यूएस. Assume a background of Christianity and whiteness and mention places like Paris and New York. The novels in my book मतलब कौन से novels? Which were written by these four writers. The novels in my book highlight instead a largely Islamic space. The students contrast करना start करो. English novels, they focus on Christianity, and the novels of this book, it focuses on, okay, they focus on Islamic space. Feature characters of color. Students understand, English fiction focus करता है whiteness पर, but actually ये novels focus करते हैं characters of color पर, understand. And centralize the ports of Malindi, Mombasa, Aden, Java and Bombay. ये सारे वो ports हैं जो Indian Ocean से connected हैं, understand. The students, English fiction, they focuses and talks about the cities like Paris and New York, and यहाँ पर जो ports हैं, ठीक है, उनके names दे रखे हैं. It is a densely imagined, richly sensory image of a southern cosmopolitan culture. Students समझना, it is a densely imagined, richly sensory image of southern cosmopolitan culture. ये it का मतलब क्या? I am talking about the book जिसका references पूरे passage में दे रखा है. The writer of this book, he says that ये जो स्टूडेंट्स चारों नॉवलिस्ट हैं, इन्होंने जो इंडियन ओशन वर्ल्ड के बारे में लिखा है उसी के बारे में दिस बिकम्स द कमेंट. अब इट इज अ डेंसली इमेजिन्ड, ठीक है, मतलब इट हैज बीन ग्रेटली इमेजिन्ड, richly sensory image of a southern cosmopolitan culture which provides for an enlarged sense of place in the world. The students' English fictions बहुत ही narrow-minded and they just focused on Christianity, whiteness, यूरोप एंड यूएसए. और स्टूडेंट्स इंडियन ओशन नॉवेल्स, उन्होंने एक काफ़ी कुछ फोकस किया, एक सदर्न कॉस्मोपॉलिटन कल्चर के बारे में, उन सब रीजन्स के बारे में जो इंडियन ओशन से कनेक्टेड हैं आपके, एंड जो परसेप्शन था रीडर्स का उसे काफ़ी हद तक एनलार्ज कर दिया. So that is something which is given in fourth paragraph. Coming on the fifth one. Now this remapping is particularly powerful for the representation of Africa. In the fiction, sailors and travelers are not all European. African as well as Indian and Arab characters are traders, nakodas. Nakodas का मतलब ये actually ships के captains होते हैं. Dhow ships, it's a type of ship. आप चाहें तो इमेज देखेंगे तो पता चल जाएगा. Runaways, जो घरों से भाग जाते हैं. Villains, missionaries and activists. This does not mean that Indian Ocean Africa is romanticized. इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसको बहुत ज़्यादा फैंसीफुल बना दिया. Migration is often a matter of force. Students,
इंग्लिश फिक्शन ने हमेशा ट्रैवलिंग एंड सेलिंग, सेलर्स एंड ट्रैवलर्स पर फोकस किया एंड दे शोड दैट ये मेजरली यूरोपियन है जो एडवेंचर के लिए ट्रैवल करते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए ट्रैवल करते हैं. बट स्टूडेंट्स, इंडियन ओशन नॉवेल्स ने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखा. उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि माइग्रेशन इज ऑफन अ मैटर ऑफ फोर्स. ऐसा नहीं होता है कि ट्रैवलिंग हमेशा एडवेंचर के लिए होता है. Many times we see like traveling force में करना पड़ता है. Traveling becomes a compulsion. It becomes because of abandonment rather than adventure. So they are actually showing the sad side of the story, which the in English fiction never have shown. So students, migration is often a matter of force. Travel is portrayed as abandonment rather than adventure. Freedoms are kept from women and slavery is rife. Rife का मतलब है something which is widespread. Okay, तो कुल मिलाकर try to understand Indian ocean novels, they have depicted this particular picture which was very important to represent Africa. इसके बाद what it does mean is that the African part of Indian Ocean world plays an active role in its long, rich history and therefore in that of the wider world. तो कुल मिलाकर students, जो people understand ये जो इंडियन ओशन नॉवेल्स हैं, दे हैव एक्चुअली ब्रॉट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन नॉवेल्स. दे हैव शोन, दे हैव रीमैप्ड द रीडर्स परसेप्शन. तो अभी तक रीडर्स का परसेप्शन क्या था? दे वर एक्चुअली दैट परसेप्शन वाज क्रिएटेड बाय द राइटर्स ऑफ इंग्लिश फिक्शन ओनली एंड दे फोकस्ड ऑन ओनली अ फ्यू थिंग्स. पहली चीज तो स्टूडेंट्स, ये जितना भी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर था, इंग्लिश फिक्शन था, ये सब इनवर्ड लुकिंग था. एंड सेकेंड, they focused on Christianity, they focused on whiteness, and they focused on showing that traveling is for adventure, this, that. But एक अलग सा perception, एक अलग सा perception, एक अलग सी remapping इन writers ने की है. So that is what the basic purpose of writing this whole passage. Now as we have understood, and I'm very confident that अभी तक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि what is the main objective of writing this particular passage. And once the students, the main objective is very much clear. I'm very confident that giving the correct answers will be easy now. 4 questions में से 3 questions तो कम से कम हम handle कर पाएंगे. And the 4th question, that becomes the trickiest question. उसे हम लोग और डेप्थ में डिटेल से डिस्कस करेंगे. बस सबसे पहले स्टूडेंट्स, if you have understood, well and good. अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. So जो भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, come on please tell me, is it okay, done? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. इस तरह के पैसेजेस को एक्सप्लेन करना और समझना, ये दोनों थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है. तो इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस एंड आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स हु जॉइन लाइव. समटाइम्स द स्टूडेंट्स हु डोंट हैव द पेशेंस, दे लीव इन बिटवीन. बट स्टूडेंट्स, पैसेजेस को जब तक आप ऐसे बीच में छोड़ते रहोगे, यू विल नॉट बी एबल टू डेवलप अ कमांड फॉर कैट. एंड दैट इज द रीजन. Patience, you like it or not, you love it or not, but you will have to read these kind of passages. Okay? चलिए, perfect. अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं and let us take the very first question. So question number 1, I want all the students who are live, please give the answer to question number 1. So all of the following claims contribute to the remapping discussed by the passage except. Okay, तो स्टूडेंट्स आप देखो किस तरह से इंडियन ओशन नॉवेल्स ने रीमैपिंग की है, उसके बारे में जो जो लिखा है. Okay, all are correct except the one. The students, what is that? Come on, hurry up. जो भी स्टूडेंट्स लाइव जुड़े हुए हैं, प्लीज गिव द आंसर्स. एंड द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग इट लेटर, प्लीज एंश्योर दैट पॉज करके यू पीपल गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन. Yes, everyone. So all of the following claims contribute to the remapping discussed by the passage except. Any answer? Shall we discuss now? Okay, चलो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. Pay attention now. The global south, as opposed to the global north, was the first center of globalization. Anyway, students, it was actually given in the passage. Writer anyway says this. He says that Indian Ocean was the center जहाँ सबसे पहले globalization start हुआ. And Indian Ocean का मतलब है the southern part. So इसीलिए students first point is anyway given in the passage. The world of early international trade and commerce was not the sole domain of white Europeans. This is what the author is challenging in the passage. Author यही तो कह रहा है, ऐसा नहीं है कि ये केवल यूरोपियंस का डोमेन था. इनफैक्ट स्टूडेंट्स, जो
रीजन्स इंडियन ओशन के आसपास है, वो भी बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वो आपस में इंटरकनेक्टेड थे और सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन वहीं से तो स्टार्ट हुआ. Anyway, students, the second point is also given in the passage. Third, cosmopolitanism originated in the West and traveled to the East through globalization. You people understand cosmopolitanism. What is the meaning of cosmopolitan? जहाँ वर्ल्ड आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाए. So that originated in the West and traveled to the East. Anyway, students, ऐसा कुछ भी पैसेज में नहीं दे रखा है. आपके इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूँ कि cosmopolitanism southern part से start हुआ. It started with the regions which were around the Indian Ocean. Anyway, students, west से start होकर east तक पहुंचा. This perception is totally wrong. So I think C becomes the correct answer. Fourth पढ़ते हैं. Indian Ocean novels have gone beyond the specifics of national concerns to explore rich regional past. Absolutely. National concerns तक limited कौन थे? The post-colonial literature. और ये जो इंडियन ओशन नॉवेल्स हैं ये तो आउटवर्ड लुकिंग था. एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स दे एक्सप्लोर द रिच रीजनल पास्ट रादर देन लिमिटिंग देमसेल्व्स ओनली अप टू लैंड एंड नेशंस. एनीवे स्टूडेंट्स, फोर्थ इज आल्सो गिवन इन द पैसेज, हेंस द बेस्ट आंसर हियर इज थर्ड. समझ में आया? अब आप देखो, एक बार पैसेज जब ढंग से समझ में आता है तो हाउ कॉन्फिडेंट यू पीपल कैन बी व्हाइल गिविंग द करेक्ट आंसर. And I want you people to have and exhibit this amount of confidence because crystal clarity के साथ we have understood what the passage is talking about. And students see, वापस से पीछे passage की तरफ जाने की जरूरत भी नहीं है understand because पूरी तरह से हमने visualize कर लिया अपने mind में what the passage is talking about. Okay? Fantastic. Yes, Bunny, बिल्कुल C is the right answer. चलो, coming on question number 2. Which one of the following statements is not true about migration in the Indian Ocean world? Okay, geographical location rather than geographical proximity. Proximity means closeness, nearness. Determined the choice of destination for migrants. Absolutely. तभी तो स्टूडेंट्स लिखा है जो पोर्ट सिटीज हैं वो बहुत दूर हैं बट सी रूट से ट्रैवल करना कन्वीनियंट होता है. तो इसीलिए स्टूडेंट्स दूर होने के बाद भी यहाँ पर लोग एक पोर्ट सिटी से दूसरे पोर्ट सिटी दे केप्ट माइग्रेटिंग एंड दैट ट्रैवलिंग यूज्ड टू टेक प्लेस. स्टूडेंट्स, ज्योग्राफिकल लोकेशन रादर देन ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी. हो सकता है कोई सिटी लैंड से मेरे बहुत क्लोज हो अंडरस्टैंड बट फिर भी कोई सिटी अगर सी रूट से दूर भी है बट सी रूट से ट्रैवल करना इज मोर कन्वीनियंट. सो लोकेशन मैटर्स रादर देन प्रॉक्सिमिटी. So that is something which is anyway given in the passage. हमें बताना है which is not true. So anyway, first option will not be the correct answer. Second, the Indian Ocean world's migration networks were shaped by religious and commercial histories of the region. Students, हमने Islamist religion की बात की यहाँ पर, ठीक है, and trade and commerce की बात की, हमने mention किया था. Even Arabs, Asians, Africans, ये सब traders हो सकते हैं. And थे in fact. इसीलिए if I talk about the commercial part and the religious part, anyway that is given in the passage. Students, if you want to read it once again, तो इसका पूरा PDF में WhatsApp ग्रुप में ASCAT का एक अलग से WhatsApp ग्रुप बना हुआ है. I recommend all the students that people become the part of that. And जितनी भी हम लोगों ने अभी तक novels लिए हैं, passages लिए हैं, not novels, passages, उन सब का PDF you will get in the free content section of ASCAT application. Coming on the third one, the Indian Ocean world's migration networks connected the global north with the global south. So you people understand now, the Indian Ocean world's migration networks connected the global north with the global south. अब सोचो स्टूडेंट्स, इंडियन ओशन वर्ल्ड्स माइग्रेशन नेटवर्क्स, ये साउथ को साउथ से कनेक्ट करता है, न कि नॉर्थ को साउथ से. और जब मैंने पैसेज पढ़ाया था मैंने इस पॉइंट को स्पेसिफिकली फोकस भी किया था. एंड आई सेड दैट पॉसिबली पेपर सेटर आपको यहाँ कंफ्यूज करें. एंड दिस इज व्हाट द पेपर सेटर हैज डन. द इंडियन ओशन वर्ल्ड्स माइग्रेशन नेटवर्क्स कनेक्टेड द ग्लोबल साउथ विद द ग्लोबल साउथ. साउथ साउथ इंटरकनेक्शन रादर देन नॉर्थ साउथ. एनीवे स्टूडेंट्स, third is not given in the passage, so which is not true? Third is not true. So the correct answer is third option. Okay, and ये जो है कि migration in the Indian Ocean world was an ambivalent experience. Even if students you are a bit confused about कि सर ये word ambivalent what does it mean, and moreover
It was not mentioned in the passage also. तो कहीं आंसर फोर्थ तो नहीं है. Students, third इतना crystal clear है कि even if there is a bit of confusion and ambivalence about the fourth option, still we should stick with third. वैसे ambivalent का मतलब होता है having mixed feelings when multiple things go on. जैसे for example, when a person is ambivalent, that means that person is in a dilemma, is not able to understand, shall I do this or not? Okay? तो mixed feeling जब आपके मन में चलता है तो उसको कहते हैं ambivalence. Understand? Okay? चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. Question number 3. On the basis of the nature of the relationship between the items in each pair below, choose the odd pair out. क्या लगता है स्टूडेंट्स, what is the answer? Yes, yes, yes. What is the answer? Come on. So on the basis of the nature of the relationship between the items in each pair below, choose the odd pair out. तो क्या लगता है स्टूडेंट्स? Indian Ocean novels, outward looking, ये तो absolutely correct है. Indian Ocean world, it talks about slavery. Yes, in the last paragraph it was mentioned. Post-colonial novels, they focused on anti-colonial nationalism. Absolutely. And post-colonial novels, border crossing. This is not correct. ये जो border crossing है, ये phrase किसके साथ लिखा हुआ था? It was written with those 4 writers who have actually focused on Indian Ocean. So that is the reason post-colonial novels के साथ border crossing को relate करना is not correct. Hence, first option becomes the correct answer. That becomes the odd pair out. Coming on, students, the fourth one. All of the following statements, if true, would weaken the passage's claim about the relationship between mainstream English language fiction and Indian Ocean novels, except. Now you people understand, इसका मीनिंग मैं पहले भी समझा चुका हूँ. ये चारों ऑप्शंस बिल्कुल सही है. अब आपको बताना है स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन वीकन नहीं करता है. Because would weaken, except. So we need to talk about the option which does not weaken. That means we need to talk about the option which actually goes hand in hand with the passage. तो पैसेज में राइटर ने जो लिखा है उससे कौन सा ऑप्शन एग्री करता है. तो दैट इज व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई हियर. सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी कंपेयर मेनस्ट्रीम इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन विद दैट ऑफ इंडियन ओशन नॉवेल्स, तो स्टूडेंट्स इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? यस, सम स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर. दीपशिखा हैज गिवन द आंसर. ओके, फोर्थ का ए. वंडरफुल, क्या बात है. If you people have given the correct answer, that itself means that your understanding of the passage was good, and जितनी मेहनत हमने की इस पूरे पैसेज को एक्सप्लेन करने में, that has actually borne fruits. तो स्टूडेंट्स अब समझो, इंग्लिश, मेन स्ट्रीम इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन एंड इंडियन ओशन नॉवेल्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेन स्ट्रीम इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन, they focused on, okay, it actually focused on Christianity. It focused on whiteness. It focused on traveling as an adventure. It focused on, okay, male dominance. अब सर ये मेल डोमिनेंस कहाँ मेंशन था? ये तो लिखा ही नहीं था. बट स्टूडेंट्स अगर डायरेक्टली नहीं भी लिखा था, you people can see, okay, if you particularly read, yes, just 1 second, yes, the last paragraph. लास्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट्स इंडियन ओशन नॉवेल्स के बारे में क्या लिखा है? फ्रीडम्स आर केप्ट फ्रॉम वुमेन. इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश फिक्शन, दे डिड नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू वुमेन फ्रीडम एंड ऑल. इंडियन ओशन नॉवेल्स, दे हैव एक्चुअली शोकेस्ड दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो. तो कल मिलाकर स्टूडेंट्स, इफ पीपल हैव अंडरस्टूड कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, तो इंडीड द बेस्ट and the most correct answer is first option. So first option is something which talks about what is actually given in the passage. Most mainstream English language novels have historically privileged a Christian. That is anyway directly given. White. That is anyway directly given. Male experience or travel and adventure. Male experience because anyway women की freedom जो नहीं थी, they did not focus much on that. So they just focused on male experience of travel and adventure. Whereas students, Indian Ocean novels, they have actually focused on showing that migration is many times forced and traveling is not always adventure. It can be because of abandonment. So this is what happened with a majority of Africans. So Indian Ocean novels, that was very important to represent Africa
in the way it was actually there. Okay, so yes students, this was the end of the passage. It was a wonderful journey and I believe that ये जर्नी स्टूडेंट्स वैसे तो देखिए बहुत टाइम से चल रही है, बट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को पढ़ाने में जो मज़ा आता है, मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट्स को उसको पढ़ने में मज़ा आता है, बट बिलीव मी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को पढ़ना और पढ़ाना दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड पढ़ने में स्टूडेंट्स अगर अभी तक मज़ा नहीं आ रहा है, आरसी पैसेजेस को पढ़ने में अभी तक मज़ा नहीं आ रहा है, द प्रॉब्लम लाइज विद यू बट नॉट विद रीडिंग। स्टूडेंट्स एक चीज़ हमेशा याद रखना, थिंग्स आर नेवर बोरिंग, दीज आर पीपल हु आर बोरिंग। तो थिंग्स आर नेवर बोरिंग। एक पैसेज में कोई स्टूडेंट बड़ा बोर होता है, बट कोई स्टूडेंट उसी पैसेज को बहुत इंटरेस्ट से पढ़ता है। स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग a good understanding and a maturity and understanding the passages. So strive for that and then you see कि VRC का सेक्शन आप कैसे ठीक है उस पर कमांड बनाते हो और कैसे उसमें एक्सेल होते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। टुमारो देयर विल बी नो लाइव क्लास, ओके, बिकॉज आई विल बी बिजी समवेयर। फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वी विल रिज्यूम आवर लाइव सेशंस। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dipshika. Thank you everyone.